साहब आ गए हैं और चीफ स्पीकर जो है रास्ते में है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। जब तक हम लोग का प्रार्थना शुरू होगा और हमारे चीफ गेस्ट का इनॉग्रेशन स्पीच खत्म होगा तब तक वो आ जाएंगे। तो राजेश सक्सेना साहब, ये नागेश झा जी, आप अपना प्रेयर से शुरू करें प्लीज। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओम ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः वम देवता यम यम सर्वाधिक सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म श्री गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे। दुर्गा जी का वंदना। जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा सदा नमोस्तुते। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम अपने चीफ गेस्ट उमेश बदानी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी आ गए हैं। उनका स्वागत करते हुए कार्यक्रम आरंभ करने का अनुमति दें और कुछ बोलना चाहें तो इनॉग्रेशन में थोड़ा सा बोल दें। तो हमारे बदानी साहब। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुनाई दे रही है। हाँ, बहुत बढ़िया सुनाई दे रही है सर। आपकी आवाज कोयल जैसी है सर। जी जी। तो मैं जो आज के चीफ स्पीकर उनका स्वागत करता हूं और इसके बातचीत के क्रम में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें मेरा कुछ इनपुट की आवश्यकता होगी तो मैं जरूर भाग लूंगा। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वो शुरू करें अपना कार्यक्रम। और जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अपने ये प्रसाद साहब आ गए हैं, केरला से आए आज कोचिंग, कहाँ से, हाँ कोचिंग से आए हैं। तो प्रसाद साहब आप कुछ हम आशीर्वाद अपना दे दें। प्रसाद साहब, एएन प्रसाद साहब, एएन प्रसाद साहब, एएन प्रसाद साहब। हाँ जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और अब आपका माइक म्यूट हो गया सर।
डॉक्टर बदारी ने अभी कहा है, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि समय को ध्यान में रखते हुए हाँ हमारे जी। जो आज के वक्ता हैं उनसे हाँ। अनुरोध किया जाए, हम सभी लोगों के सभी लोगों के तरफ से उनको बहुत ही आदर से, सम्मान से हम लोग उनको निमंत्रित करते हैं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू। अब मैं मिश्रा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अब बहुत दिन बाद आप मिले हैं और जी ईश्वर जी की कृपा है कि आपने अपनी सहमति भी दे दी और जी जी हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर और इतने विद्वान लोग भी आए हैं। हम लोग आपके अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो प्लीज शुरू करिए। So, good evening, everyone. And it's been really long time that we saw each other. And somehow I've been keeping busy, so I won't waste much of time on that. And even now I was rushing to be in time, but I'm sorry about that. I got a little delayed, but I was driving, so I couldn't rush through. So I'd sent you a message that I'll be starting 7:15. So by and large, we have started right in time. So we'll talk about healthy lifestyle and how to achieve it. This is a very uh, kind of burning topic for the time, and everyone is now aware of what lifestyle or a bad lifestyle can do to life or the living. So there are certain things we must start with. Number one is, what is lifestyle? Lifestyle is the way we live. It can be defined in a number of manners, but the lifestyle, as we see it, is the way we live on a day-to-day basis, and it can lead to a healthy life. It can lead to unhealthy life. Now, if you go a little back into the last century was dominated by infections, largely infections, and people would die of infections left, right, and center. And there were villages after villages which were, wiped off due to plague and cholera and minor infections. But 40s, there was discovery of penicillin, and that led to a remarkable change in the outcome of infections. And we started treating the people, and people who were otherwise dying of minor infections like pneumonia and other things, they started living longer. So by the turn of century, we learned how to treat infections, and now hardly ever we hear someone talking of dying of infection, severe infection. There are exceptions, of course, and that may be related to the lifestyle that we'll come to later. Now, I guess some of the mics are still unmuted, so maybe that is creating some noise, but I think the organizers can look into that. I'll continue. So, lifestyle is important in the sense that by the turn of century, as I've said, we took control of infections, and we saw that nobody was dying of infections. Then what happened? During this course of everything happening, we started living rather, easier life. And in 40s and 50s, while India had just become independent, we had a lot of things to struggle with. Somehow those things started waning, and we started living a more comfortable life. More comfortable life means it affected our day-to-day living, and that affected chiefly uh, some of the habits which led to some of the diseases which we named as non-communicable diseases. Non-communicable means it could not be caught from one person to another, like viral infection or cough or cold, which can be caught from one person to another. And we recently saw the havoc that COVID virus created. But this is non-communicable, which means most of the diseases that come under this, precisely four of them: cardiac diseases, diabetes, high blood pressure, cardiac diseases included, stroke, and cancer. So all these 4 5 diseases, they have been summarized as, there are others also, but these four diseases have been summarized as major challenge to the healthcare delivery system, and that is called non-communicable diseases. Again, meaning thereby it cannot be caught from one person to another. Like if you're sitting in the same room with someone who is diabetic, you will not catch it
Otherwise, if someone is having scabies or someone is having cold, you might catch it. So non-communicable diseases, they are the major challenge. Why they are major challenge? For a simple reason. If you have cough, if you have loose motions, if you have diarrhea, you can be treated with a drug or without a drug sometimes. Most of the times, minor infections are treated without drugs, but then drugs are also given, and they are given for a short course of maybe 5 to 7 days. In exceptional cases, it could go on to maybe 2 weeks, 3 weeks, depending on like urinary infection, we treat longer. But in no case it has to be given longer than that, except of course tuberculosis or leprosy and other some other diseases. But by and large, most of the diseases can be treated within 5 to 7 days, and that gets cured. But unlike that, these four diseases that I mentioned, they cannot be treated over a period of 4 or 5 days. In fact, they cannot be treated, they cannot be cured. So there's a difference between curing and controlling it. Now, why we should control it? Now we know that it cannot be cured. Once someone has got diabetes, it cannot be cured. Someone has got high blood pressure, it cannot be cured. Stroke cannot be cured. Once it has happened, it has happened. So we control it. Now, controlling it, that requires a lot of patience. That means we must control it after it has happened. But the bigger challenge is how to stop it from happening. Once someone has had a heart attack, it is treatable. It is treatable to the sense that person can come back to the normal life. He can resume his duties. He can start working. But no, he cannot be as normal as he used to be in most of the cases. So why not stop it right in the beginning, in the primordial stage? And that is where this whole talk is concentrated on. That means how can we check the development of these four deadly diseases, which is creating a havoc. Why it is creating a havoc? Because it is at a personal level, of course, it makes you sort of not very capable of working. Like most of us, we've seen the working age group is what, 15 to 45 or 50 years. Most of us in India. Now, in this period, if someone catches this disease, someone who is diabetic, you cannot send him over to a site where a lot of hardships he has to face. If someone has had a heart attack, he cannot be, given the responsibility of a major project because that is not that person doesn't he's not in control of his health. He's not in control, total control of himself, which indirectly or directly translates into lower productivity. Now, those in HR, they will understand what I am talking. Low productivity means absenteeism. Absenteeism because of poor health, or worse still, there are people who are present but still absent. That is, bodily they are present but they are absent. Their contribution to the organization or the nation or society has become very, very questionable, which is why this is important. Also, if you look at it financially from the government point of view, then treating such cases or taking care of such cases, it becomes very important to understand that it has to be given for life. I repeat, it has to be given for life. So someone who has been declared diabetic at the age of 42, he has to be given treatment for another 40 years minimum, which means either state gives it or you have to spend from your own pocket. Ultimately, it is a financial drain. So all things put together, we need to look into why and how we can control these four diseases which is affecting our lives. I think this gives a ice breaking and this gives a background of why we are here to discuss this. Now, if you see the four things that are related to this lifestyle diseases, they are bad or poor or unbalanced diet, low physical activities, use of tobacco, and stress. And that is where we need to be very careful about. Low physical activity, unbalanced diet, use of tobacco. These three are very, very important and they have to be addressed. While addressing them, we must understand what to eat, how much to be active, how much to remain active, and then no use of tobacco. I guess this is clear. Now, these three important factors have to be discussed because these three are common thread which run through all these 4 or 5 diseases that I've just mentioned.
So we start with the diet. Now everyone has been taught since class 3 or 4 or 5. You all remember that we should eat green vegetables, we should eat a lot of proteins, we should eat healthy diet. Now, what do we mean by healthy diet? So if you see, healthy diet means the man was born to hunt, gather, and then eat. So it was living on a day-to-day basis. So the man would wake up in the morning and then start chasing the animals, which were anyway very tired by most of the animals. They would actually hunt in the night. So they, by the dawn time, I mean, the animals were tired, and the men were very fresh. So they would just go out, chase them, kill them, and eat them. There were no refrigerators, so it could not be stored. The food would go bad, and then they had to wake up again, and that is how men lived. Now, agriculture started 10,000 years ago, almost, and then that created some bit of problem because people did not have to wake up every morning to arrange for food. So they had to store the food. Agriculture permitted them to make some food or create some food or grow some food which could be stored in silos and godowns and which could be eaten all the year round. This was a major change, which means the people who had to wake up early in the morning, run, chase the animals, and then get the food, they were fit because they had to run every day. In fact, the animals they chased, they also were fit because they had to run for their lives. So it was a contest for life. And the people had to live chasing this every day on a day to day basis. Once the agriculture started, that turned everything over. Now people could relax in the home, and then on the rainy days they had a lot of food grains in the store, and they could eat that and survive. So agriculture 10,000 years ago, they actually made a lot of change because the men they learned how to domesticate the animals, they learned how to do farming, and the physical work they started getting lesser and lesser. In fact, that also created a lot of class in the society. Those with history, they could, I'm poor with that, but I understand that created a class system because those who were, creative, those who created the agricultural tools, they were given less of work because that was a specialized work. And those who were unskilled, they were given the laborer's job. And this is how the class system started. Now, industrial growth started about 1780 onwards. Industrial growth that actually eliminated the repetitive work, and industrialization, in fact, was a major turnaround. So that actually automated the work, assembly line system, and then that also led to processed food. Physical work was further less. So this is in general, if you see or look back into the diet, how it has changed our life and lifestyle. Now, how much diet we need? There is something called resting energy expenditure, and that is roughly, 900 calories plus 10 times your body weight. So, if you are maybe 50 kg, the calories can be calculated as 50 into 10. That is 500 and plus 900. So that is about 14 to 1500 calories. That is for an average male who is about 50 kgs. Females, it is 700 plus 7 times. So which is about, lesser than that because their energy requirement less. And then depending on different category of workers, those sedentary workers, they'll have less. The moderate worker, the heavy physical worker, they will be needing more of calories. So those working in the fields, those who are working in the building, construction, carrying a lot of load on their heads, walking all the way, so they'll require more and more. Now, there is also a concept which is, of course, recently being challenged, the BMI. BMI is, again, that gives you an idea. For 24 or 25 is the cutoff for the normal BMI. And if anything which is more than 30, that is obese. That was the earlier concept. Now they have changed this concept and they're challenging. But by and large, BMI works well for the obesity. Or something like, waist hip ratio. So waist hip ratio should be less than 1 in females, and for males it should be 1. So waist to hip ratio is another one which can be. We are at a point where we can discuss about free radicals and what is aging. Free radicals are something which are, like bullets. The body creates these bullets to kill the bacteria or viruses in response to minor infections on a day-to-day basis, on a minute-to-minute, hour-to-hour basis. This, along with other antibodies and other system of immunity. So free radicals, they oxidize. That means oxidize in simple terms is burn. And
and they burn the bacteria or viruses, and this is released by the body. There are other occasions when the free radicals are released, and they are UV rays or pollution. They also, lead to a lot of free radicals. Free radicals, if you want to understand simply, it is like you must have used the bleaching powder. So if you pour bleaching powder on a piece of cloth, it discolors it. You must have noticed. So that is because of free radicals. So free radicals, in the same manner, destroys all the unwanted stuff. Now, this is also triggered off unnaturally by irregular lifestyles. Now, this is important to understand. If your lifestyle is bad, then these bullets will be unnecessarily released in the body without any provocation. And that means your body will start burning itself. Am I clear? I guess I'm clear. So, if you are having unnecessary free radicals released in the body, that means they are going to harm you. And they can be triggered off by bad lifestyle, fast food, smoking, stress, high salt intake, high, Ajinomoto and kind of thing. So these things can trigger off the release of free radicals. And if they are in excess, as I've said, they can lead to cancer also. They can help, deposition of bad cholesterol inside the blood carrying vessels. It can cause, dementia, where people start forgetting things early, Alzheimer, and it can also lead to blindness. So there are many things that can happen because of free radicals. So, what I mean to say is, if our diet is not good, we are not very careful about the lifestyle, then probably we are inviting these free radicals to oxidize our bodies. And in other words, we are aging faster if we are not taking care of our lifestyle and our daily habits. Coming back to the calories, carbohydrates, proteins, and fats, they are the major supplier of calories that constitutes the food on a day-to-day basis. So we start with carbohydrates. Carbohydrates, we all know that they are in food grains, and food grains, they release a lot of energy. That is a kind of instant energy, and this gets us going all the day, and this is very much needed, especially brain, heart, kidneys, all the vital organs. They require carbohydrates, or glucose in other terms. Carbohydrates are broken into simple glucose, and they are consumed or utilized by the different organs through mitochondria and other things. Now, if you eat a lot of carbohydrate, it can release a lot of glucose in the blood, and it can again lead to glucose spike, which can lead to the powerhouse, that is mitochondria at the mito or cellular level. They are overworked, and that is, in some we call it inflammatory state. That is like in a house on fire. So, if we unnecessarily consume a lot of carbohydrates, then it is similar to a house on fire, which means free radicals are generated, and as I've said, the blood can start depositing, cholesterol inside the blood vessels, leading to choked blood carrying pipes, leading to lost vision, heart problems, kidney problems, brain problems. So this is the beginning of it, which means if you take carbohydrate which does not give you sudden spike, it's a kind of, you have a guest, you can treat them well. But if you have 15 guests suddenly in a home, suddenly the whole household becomes upside down. You must have faced it also. So this is similar to that. If you take a lot of carbohydrates, the whole system gets overheated, inflammatory state, and that can lead to a lot of damage, which is why we need to eat low and healthy carbohydrates, which can lead to staggered glucose release. Here, I want to explain what is staggering of glucose release. You may eat about 400 calories of a meal, maybe, but if it is in the form of pure sugar, like fruit juice, or glucose solution or glucose powder or rasgulla or things like that, so it can instantly release all these 400 calories into the system, or entire glucose into the system, and that can overheat the system, which is why it has to be staggered. So how do you stagger it?
Imagine a rabbit which you want to hunt. If the rabbit is out in the open, it's easy to hunt. But if the rabbit is inside a bush, then it is very difficult. You have to chase it for some time before you can hunt it. Similarly, if you can tangle these carbohydrate into fibers, fibers you must have heard about that. Fibers, resedar. So fibers, if you tangle this carbohydrate into the fibers, then the release is slowed down, which means the sudden spike of sugar inside the blood will be retarded and it can be released over a period of maybe 2 to 3 hours, which is why we need to take care of our carbohydrate, which should be taken along with a lot of fibers. I'll come back to the fibers later also. That means you should take whole grains, wheat, brown rice, millets. We are talking about millets in a big way these days for these reasons only because they provide a lot of fibers, and these fibers are very important because of these fibers you can actually look after the glucose, sudden glucose spike, which can be taken care of. Okay, so we go for something which is not bright, go for dull colored food, the carbohydrates which are dull in color, like brown rice, no maida, and go for whole wheat and grains. 7 grain is the call of the day. We go for 7 grains. That means it should have bajra, jowar, and jowar, and other, chana, other things. So low and healthy. High and unhealthy, that means it has no bran, fibers or nutrients. That means white rice, white flour, white sugar, they are all bright looking. So in a nutshell, the carbohydrate that is dull looking could be better for you, which is bright looking, it could not be as good for you. Fibers, as I was discussing, fibers are broken down by some good friendly bacteria inside our intestines and they create small short chain fatty acids. I don't want to bother you with that. But there are uses of this because there are certain, acetate, butyrate, propionate, and these are compounds which are formed in response to the fiber from the fibers. They're broken down and they help you fight the infections. They're anti-inflammatory and they can be used as energy substrate also. Most of all, it is actually helping us slow release of sugar into the blood. So nuts, seeds, onions, and garlics and other things they can be had. Now come to fats. Now fats are, they should be about 30% or something. That should be our diet, daily diet. A nutritionist could be a best person you can get a guide from because depending on what disease you are suffering from. If you are healthy, then you can actually break it down. A thali can be broken down into two parts. The lower half can be all green vegetables, and upper half can be divided into two. First half can be protein, other half could be carbohydrates. This is a general rule. And put as many colors in the thali as possible. So the body has the fat deposition if you have excess of carbohydrate or if you are taking excess of fat. It's not that the fat only leads to fat. Excess of carbohydrate also gets converted into fat, and that gives the whole belly a very unique shape, which is commonly seen in the oriental countries like India. The big belly, central obesity, which is active, it is not inactive. So it is actually pear-shaped body is seen in the Westerners who have high, protein content in the diet. But in our country, since we consume a lot of carbohydrates, so our fat deposition is about apple shape rather than pear shape. So fat has to be avoided. Then what fat is good? The fat which freezes at the room temperature is not good because that's a saturated fat. That means go for unsaturated fat, and that comes in the sea fish or general fish, salmon, tuna, sardines. They are very good sources of good fats. And plant oils, of course, canola, peanut, olive oil, sunflower, but they are high in calories, so you have to keep in mind. They are good fats, but they are also high in calories. So it's not that sunflower oil you are taking, so that is going to take care of everything. They are good, but they are not good because they are carrying calories also. So palm oil
is to be avoided as much as possible. Trans fat has to be avoided. Trans fat, you know what is trans fat? The trans fat is something which is uh, heavily consumed in the food industry, and it is used everywhere, almost everywhere. Think of samosa. You think you're passing by the samosa stall, and it's very difficult to restrain yourself because of the flavor. So, trans fat gives flavor, it keeps the food crispy, and it gives a longer shelf life. So the samosa he prepares in the morning, it can as well be served till the evening because he has put a lot of salt also inside so that the bacteria cannot grow and the flavor will remain. So trans fat has to be less than 7% of the total fat, but avoid it as much as you can. Then we come to the proteins, and proteins are the building blocks. They fight for you during the infections. It is the protein, remember, which has saved you all so that we are sitting together after the COVID. It is the protein that you might have consumed in your childhood, all your life, or during the COVID episode. But proteins are the saving grace. They are the building blocks for the body. The growing children, they need a lot of proteins. And of course, at all the ages, the protein should be there in every meal. One or two pieces of protein. Animal proteins are better, but no doubt other proteins are also very helpful. And as we say, poor man's protein is dal, so a lot of dal has to be consumed. So beans and pulses, soy and tofu there. Go nuts. Nuts are very good with protein. Snack on almonds, walnuts, cashews. They are rich in fiber, protein, fats. And then go fishing twice a week at least. Sea fish, that is preferable. Use less oil. See, preparing, baked is better. Preparing the food is very important. I wish I could give you more insight into that. But I guess using less of oil, using more of grill, more of roasting, oil-less cooking has to be there. That will save your life. So now, healthy eating. As we said, don't dig your grave with knife and fork. Don't use your knife and fork to dig your grave. Think of Mediterranean diet. Mediterranean countries, they were found to have less episodes of cardiac illnesses. And people went into that, they went there, investigated, they did a lot of research, and they found out that their diet is something which is different from other parts of the world. What was it different in? They used a lot of fruits, vegetables, salads, whole cereals, seeds, nuts, olive oils, sea fish, cheese, curd, seafood, and also they were very active. That led to a belief that Mediterranean diet has to be preferred. You should accommodate as many of them as possible in your diet on a day-to-day basis. Then apart from that, eat multiple small meals and portions. That means eat to live, not live to eat. Short meals for long life. Stomach is not a waste basket. Do not treat your stomach as a waste basket. No. Treat yourself with dignity. Eat short, small meals, which is nutritious. Eat in company. Don't eat alone. If you're eating alone, you'd be eating a lot. Chew and relish. Spend time chewing it. Have salads before feasting. When you're going out to feast, avoid feasting. Have your own meal back home before you report for any grand get together. We have a lot of festivals and religious functions going on all the year round almost. So please avoid eating outside or at a friend's place. Remember, a dieting of 15 days can easily be ruined by one meal at your friend's house. So always remember that you are in control of your own body and your life. So do not eat unnecessarily, recklessly, like someone who is illiterate. So eat in company, chew and relish, give some time to chew, relish. In any case, it is very, very important to realize that someone who has cooked the food for over 3 hours should not be eaten in 3 minutes like savage wild animals. It is a disrespect to someone who has cooked the food for that long. So eating in company slowly, that will satiate you. The signals from your stomach will be there into your in your brain, and that will tell the brain not to eat any longer. Cut on salt. Salt means
canned food, preserved food, snacks, the fast food, the junk food, sugar that has to be stopped. At least raw sugar has to be discouraged. No sugary drinks, only sweet potatoes if you want. Raisins and fruits can be taken once in a while. Old pickles, always remember old pickles, which we all are about to prepare. The mango pickle season is there, but they all are loaded with salt and they have to be taken in moderation. Dinner 2 hours before the bedtime. Allow the dinner to sink in before you go off to sleep. Junk food, past 50 years, things have changed. Changed in the sense that the kitchen is waning. I've heard from some of the youngsters in Bangalore, and they were telling me that now they are selling flats which has kitchen optional flats. Can you believe it? The flats they are selling has no kitchens because they are saying that we are outsourcing the kitchen from different platforms. I can't take the names of them, but you order them and within 15 minutes they have all kinds of food available. So kitchen is waning, fast food is gaining, the industry is gaining. Food intake has gone up by several hundred calories in past 30 years thanks to all these easy availability. They are high in fructose, high in calorie, lipid that is fat rich, and they are high salt and nitrate contents, low leptin, high ghrelin, no satiety. That means since they are high in calorie dense food will never allow your brain to perceive that the stomach is filled. If the volume is high, as I've said, it is full with fibers, then it will stretch out the inside of in the stomach, and that will send a signal to the brain that, okay, stop eating. But if you take calorie dense food, in that case, what happens, the brain stops getting such signals and then you continue to eat. And the children, our youngsters, they spend all the night working. I really feel for them because they work all the night, they keep taking all these junk food, they keep drinking coffee, and that is how they're destroying their health. Easy reach is there, good flavor, more intake. So that is junk food we must avoid. In a nutshell, the food should have as many colors, the rainbow diet, as many colors as possible. Eat small meals, eat in company, eat healthy, and choose your food wisely. Water intake, that is again a very common problem that people ask me. It depends on where you live. If you're living in places like Raipur, where it is 40 plus already, the temperature, then you need to take more of it. Season, depending on season also, in cold, we need less of water. Outdoor workers, they'll need more of water. Activity levels, depending on if you're a player, if you go outside, then the water. But in general, uh, illnesses, fever, kidney diseases, prostate, we restrict the water intake. Those who are having prostate problem, they need to have all the water, before 7:30, and after that they have to relieve themselves before they go off to sleep. Then pregnant and nursing women, their intake is different. My point is that water intake is related to what you do, how you're living, and there cannot be a generalized statement like you must take 5 liters of water or 4 liters of water daily. No, in general, it is 1.5 ml per calories that you eat every day, which means if your diet is about 1500 calorie for the day, then the water intake should be accordingly 1.5 times of that, which is about 2.5 liters. So water intake we have cleared. Exercise. Now this is very important. People always have a question about how much exercise, and I have no time. I'm very busy. Friends, if you have no time for exercise, then you prepare yourself to find time for illnesses and spending some time in the hospital. Not fit enough. Some people will say, no, I'm not fit. My doctor says, no, you cannot. No doctor will say, do not exercise. They'll customize the exercise for you. They'll tailor the exercise for you, but exercises have to be a part of your living. Some people will say, I'm very tired, I come back very late. I'm not the athletic type. So it's very boring, very painful, very harsh. Oh, no, it's too late. I'm 60 now. You asked me to do exercise. A lot of excuses. But benefits are immense. It triggers your body's good hormones. You heard of morphine, opium. There was opium war. There was opium route through China. A lot of things happened in 18th century. So opium
is something which relieves pain. It gives you excitement, a lot of relaxation. Now, when you do exercise, something happens inside the body. I'll tell you a small example. If someone beats you up with a stick, first stick, second stick, it is very painful. After that, the body does not perceive the pain. What happens? Because a lot of morphine like substances are released in the blood by the brain, and that takes away the pain. So, this is the mother's nature mechanism of surviving the pain. Now, if you do exercises, if you do some strenuous exercise, a lot of good, these morphine like substances are released in the body. In other words, you feel good. These are happy hormones which are released in your body and you feel good. You feel happy. It improves your mental status, your intelligence, your your activity, mental activity will improve, your brain functioning will improve. It cuts on anxiety, it cuts on the stress. It also exposes you to the vitamin D. It's very surprising that many of the patients that I see, they come to me with low vitamin D. It is an irony that people living in a tropical country like India, where we have exposure to sunlight almost all the year round, and we still run short of vitamin D. This is an irony because we live in our homes, we go out in the car, we go out in the buses and trams and taxis, and we go to the office, we go come back from the office, we go to the mall, buy things. So no point of time we are exposing ourselves. Forget about ourselves, not even our children are being exposed to the outdoors and sunlight. Strong bones are muscles, so you have less chances of falling down and injuring yourself, especially at 60 plus. If you fall, then you have actually pinned yourself to the bed for at least 3 to 6 months. So the benefits are immense. People should actually think of it as something which can control the weight. It can also cut on the cardiovascular risk, diabetes, cancer, colon cancer, breast cancer, and it in general gives you a better chances to live. Now, how to do the exercises? Go slow, sustain it. Do not jump into it. Do not do it 1 hour today and then 3 days you relax. No, build it up. Graduated exercise, aerobic exercises. Achieve 55 to 80% of your target heart rate, which means your heart rate should come to a certain level, and you sustain it at that level for 30 minutes every day for 5 days a week. 150 minutes of aerobic exercise. How to calculate the heart rate? Roughly speaking, you bring it to do something which can bring it to 120 to 130 per minute. It is actually 220 minus the age. So if someone is maybe 60 years of age, so his heart rate should come down to almost how much does it work? I guess it's about 120, 130. So depending on but in general, anything more than 110, it should be brought to that and kept at that for minimum of 30 minutes by way of running, jogging, playing, tennis, swimming, dancing, brisk walking, do whatever. But then you need to keep it at that for 30 minutes. Record the progress, spread the word that you have taken to exercises, keep it interesting, use music, go to new gym, new park, neighborhood music, find some friends who are there, always there with you during the exercises. Next comes the sleep. Sleep deprivation is again a very big issue. If someone is deprived of sleep, then he might be likely to falls, accidents. So if he is in industry, if he's working somewhere, he might come to some accidents, he meet with them. Work mistakes can be there. Moving machines, air traffic controller, air traffic mishaps. Mood will be very irritable, impatience, lot of fights, workplace, industrial unrest. So weight gain again, no immunity. So sleep is very important. How to ensure good sleep? For good sleep, we always say that you must earn your sleep in the coins of physical activities. You cannot have a tablet of sleep for a long period of time. So you must work hard to get proper sleep. And that is where the exercises come into the picture. Sleep schedule
must be kept even on holidays. Do not overeat or undereat. When you go to bed, please carry no electronic gadgets with you into the bed. Remember, bed is only for two things, for sleeping, and the other thing I'm not spelling it out. Comfort, room light, it should be very dark, the mattresses should be comfortable, pillows should be comfortable. So, in a nutshell, you must maintain the sleep hygiene, which is very important. Yoga and meditation, they have a lot of things, lot of importance in our day to day life. You must practice, but see, everyone in every street, every nook and corner, you will have an yoga expert. Please see to it that someone who is teaching you yoga, he is aware of it and he knows how and how to do it. But yoga has its role in controlling all the diseases that I have been repeatedly mentioning. Then next comes alcohol. Alcohol is a slippery slope. Please do not start it if you have not taken it ever. Moderation is the key. Maximum of 60 grams a day prevents. Some people say that it might prevent heart disease, the red wine, but please do not fall in the trap. Stay away from alcohol as much as possible. From this forum, this is my message: no alcohol. And finally, the tobacco. Now, tobacco is a major risk factor in lifestyle diseases. And if someone has been smoking for all his life, he might as well say that, oh, it's too late. I've done it for such a long time, probably all the damage is done, and there's nothing I can do. Please, for God's sake, remember, 2 hours after the stoppage of smoking or cessation of smoking, nicotine is out of your system. 12 hours, carbon monoxide is out of your system. There's more air in your lungs and you feel fresh. 2 days, there's a better sense of smell. 2 months, lungs are more efficient. Your cough will be coming out faster. Blood flow to the limbs and brain that improves. 12 months, the risk of heart disease will be half compared to what it was earlier. And in 10 years, remember 10 years, the risk of lung cancer is less than half. And in 15 years, the risk of heart attack and stroke is almost the same, which means it is never too late to stop smoking or using tobacco. I guess I'm very clear on that, that tobacco is harmful and stopping tobacco at any stage in life is always helpful. That should be the message. Needless to say, tobacco is a major contributing factor in genesis of cancers. So with this, I come to the end of this talk. I try to keep it small and relevant. I hope it has been perceived well. And if there are any questions, another 15 minutes, I'll be able to take them. I thank all of them, all of you who are present here for at least giving me a patient hearing, and I'll welcome all the questions. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. बहुत अच्छा Dr. S.K. Mishra. You have given very nice suggestion, and you have narrated that how exercise is useful for us, how tobacco is injurious for health, and how what is sort of thing we should take in food, what is sort of thing we should avoid. So many beautiful guidance you have given. And last time you had also given so many nice suggestions. And people usually hesitate in following the strict discipline of maintaining a lifestyle. Morning exercise, morning awaking, morning running. How much useful and what will you feel you will be getting, how body will be relaxed with these things. You have very beautifully and in a very simple word you have narrated. In addition to Thank you. whatever you have given suggestions, sir, and you have given life to our group members, at least 25, 30 people are here. All are Thank you. great scholars. I will request our special guest, Dr. Sanjeev Sinha, who is head of Department 10. He has come. You want to add something, Dr. Sanjeev Sinha? If you want to add something, please add. Dr. Sanjeev Sinha, you are head of the cardiologist and you are saying daily handling so many cardiac patients also. So I will request Dr. Sanjeev Sinha, our special guest.
If you want to add something, डॉक्टर संजीव सिन्हा साहब, आप कुछ बोलेंगे? डॉक्टर Thank you, आपकी Amitabh ji. हाँ, वेलकम सर, वेलकम, वार्म वेलकम. Thank you very much for including me in the group and Yeah. inviting me. I was mesmerized by the talk of Dr. S.K. Mishra sir, and you have in nutshell very precisely बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को आपने बोल दिया. तो डाइट एक्सरसाइज के बारे में तो जो आपने बताया, मैं यही चाहूंगा सब लोगों से कि जो टिप्स दिए वो बिल्कुल परफेक्ट है. एंड एज आई एम ए कार्डियक सर्जन, I do cardiac surgery and see every day patients suffering from cardiac disease and new type of symptoms and new type of sufferings. तो एक चीज आपने जो बताया मैं फुली इंडोर्स करता हूँ, वो अल्कोहल के बारे में. अल्कोहल के बारे में बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड में या जो हमारे अभिजात्य वर्ग में है, इसमें बड़ी शान से ये लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने ही तो बोला है कि 2 पेग रोज ले सकते हैं. तो दिस इज ए वेरी बैड नोशन और गलत कंसेप्ट है लोगों में. वो किसी यूरोपियन कंट्री में जब मौसम बहुत ठंडा रहता है, सहने लायक नहीं रहती है, तो कभी अल्कोहल से कुछ एनर्जी गेन करने के लिए या लेते थे वो लोग, और खासकर वाइन के बारे में. बट एनी अल्कोहल, जैसा आपने बताया कि सब चीज अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो भी हो, और वो डिपॉजिट होता है बॉडी में. तो जो हमारे अल्कोहल है, जो हमारे लिकर हैं, सब फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, या जिस भी फॉर्म में, और अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होते हैं और आके डिपॉजिट होते हैं. इसलिए इस आपके मैसेज को आपने बोला, ये मैसेज है मेरा इस फोरम में, इसको मैं एंडोर्स करता हूँ और ये बोलता हूँ कि ये गलत कॉन्सेप्ट लोगों को हम लोग दूर करें. कि अल्कोहल, स्मोकिंग के बारे में तो सब जानते हैं. और दूसरी एक चीज आपने बताया एरोबिक एक्सरसाइज. अगर आपसे कुछ टफ एक्सरसाइज नहीं होती है, बहुत लाइफस्टाइल ऐसा है, आजकल के यंगस्टर लोग हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सो मेनी थिंग्स, करियर, स्टडी, जॉब्स, सब परेशान रहते हैं, तो टाइम नहीं मिलती. तो थोड़े बहुत जो एरोबिक एक्सरसाइज है जो आपने बताया कि धीरे धीरे करें, जैसे स्कूल में पीटी करते हैं या स्कूल में जो ड्रिल करते हैं, उस टाइप की चीजें हमेशा लाइफ लॉन्ग करते रहें. और इसमें टाइम भी कोई बंदिश नहीं है, जब भी आपको मौका मिले आप इसको कर सकते हैं. इट्स बेटर प्रेफरेबल टू डू इन एम्प्टी स्टमक, बट व्हेनेवर यू गेट चांस यू शुड डू इट, आइदर योगा और एरोबिक एक्सरसाइज. और दूसरी चीज है जो मैं एक बार बताऊं कि ये तो आपने बताया खाने के लिए, डाइट के लिए और एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल, ये सब में. दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमें इन्वायरमेंट एंड इंटरनल डाइट. जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो हमारा ये जो जानना है, समझना है. जैसे हम बोलते हैं कि पोल्यूशन, एक्सटर्नल पोल्यूशन तो है ही, पूरी दुनिया परेशान है और लड़ रही है, लेकिन जो हमारा इंटरनल पोल्यूशन है, हमारा भाव, हमारे जो विचारधारा है, वो इतनी स्वस्थ होनी चाहिए कि हम अननेसेसरी स्ट्रेस में या कंपटीशन में ना पड़े, और इसको अपने मस्तिष्क को, पेट के लिए तो आपने बताया, या मस्तिष्क को भी बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से स्वस्थ रखें और कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस में ना पड़े. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दूर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. टेक 5 हम लोग बोलते हैं. स्ट्रेस और स्ट्रेन दूर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्मल डाइट अच्छा रखेंगे, अनसैचुरेटेड फैट नहीं लेंगे, और कुछ डिजीजेज हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इससे दूर रहेंगे. ये 5 चीज से दूर रहेंगे तो हमारा हार्ट का हेल्थ जरूर अच्छा रहेगा, और हम सब लोग इसी को पालन करें. थैंक यू अमिताभ, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बहुत मिश्रा अच्छा साहब. सर, वेरी गुड एडिशन. और इन्होंने अपने मेंटल पीस के बारे में भी बताया. और डॉक्टर मिश्रा साहब ने जो एक बहुत बड़ी बात बताई, जंक फूड, तुरंत अभी रसोई मंगा, आज खाना नहीं बनेगा, बाहर से मंगा लो, 2 मिनट में आ जाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इसको भी आपने बताया. इन्वायरमेंटल को भी हमको पीसफुल और स्ट्रेस लेस रखना है, जिससे कि ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी. ये अमृत बाणी है
लेकिन मेरे बोलने से अच्छा हमारे डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, इतना बढ़िया सुनने को समझने को आ रहा है, और हम लोग चाहेंगे इसको कि अब इसको रेगुलर वे में एक्सरसाइज करें, बाहर का फूड नहीं लें, और टोबैको को तो एकदम जितना जल्दी वो छोड़ दें, वाइन की बात ही नहीं सोचनी है, और खाने में क्या क्या चीज लेना उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो हमारे एक एम्स के डीन साहब भी, हमारी जो चीफ गेस्ट हैं बदानी साहब, वो भी कुछ ऐड करेंगे, तो और हम लोग कुछ नया चीज सीख पाएंगे। हम अपने एक्सपर्ट से पहले सीख लें, फिर हम लोग को दूसरे अपने, और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आए हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी आए, बहुत सारे डॉक्टर आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे लाइफ को बचाने वाले लाइफ सेवर डॉक्टर्स जो भगवान की तरह हम लोगों के लिए, वो हमको सजेशन दें। डॉक्टर बदानी साहब, डॉक्टर बदानी साहब, एक बार एम्स में गया मैं, तो उन्होंने किसी पेशेंट को दिखाया कि देखिए अमिताभ सर, ये कल भर के मेहमान है, ये पीड़ित हैं कल परसों तक, और उनसे बड़े प्रेम से बात किया, हमको 2-3 पेशेंट से मिलाया, हमने उनकी मानसिक स्थिति देखी, उनके मेंटल पीस को देखा, उनके घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक को समझा, और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो डॉक्टर बदानी साहब, आप क्या बोलेंगे इन एडिशन टू दिस? इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज आप कुछ भी और भी सजेशन दें। मैं बता दूं अमिताभ सर कि डॉक्टर उमेश कुमार भदानी क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट हैं, ये नेशनल एक्सपर्ट हैं, और साथ में पैलिएटिव केयर इनका पैशन है। आपने जो बताया कि बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट से मिला है, तो पैलिएटिव केयर इन्होंने एस्टैब्लिश किया है एम्स पटना में, और इनका पैशन है। बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तो जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। कितना बड़ा शहर था वो एम्स का इलाका, एक बार वो वहां पे 8 लोगों को गर्दन काट के फेंक दिया था, उस जगह को आप लोगों ने स्वर्ग बना दिया। इन्होंने हमारे एथिक्स एंड वैल्यू के उसमें प्रॉमिस किया कि मैं 100 गाछ लगाऊंगा, आज उसको हरियाली बना दिया जिसको लोग देख करके खुश होते हैं। तो बदानी साहब हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। मैं बदानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें कुछ ऐड करना चाहें, जैसा मिश्रा साहब ने और हमारे संजीव सिन्हा साहब ने बताया। आप क्या ऐड करना चाहेंगे बदानी साहब, हमारे चीफ गेस्ट? बदानी साहब, बदानी साहब आप हैं? बदानी साहब हाँ हैं, तो बदानी साहब आप बोले, हमारे चीफ गेस्ट। हाँ, आप उनका कुछ ऐड करेंगे बदामी साहब? मैं उनको फोन करता हूँ। हाँ, आप फोन करिए। और लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, हाँ वो अच्छा अच्छा। डॉक्टर एस.एम. भट्ट, ये हमारे आयुर्वेद हैं, और इन्होंने आयुर्वेद पे बहुत रिसर्च किया है। एस.एम. भट्ट साहब, आप इसमें क्या जोड़ेंगे? प्रणाम सर, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था सर को। सर ने तो बहुत गंभीरता, बहुत प्रिसाइजली बहुत सारा कुछ बता दिया, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया, क्योंकि कोरोना के बाद अगर स्थिति देखें तो बहुत कुछ बदल गया। कोरोना ने हमको एक मैसेज दिया कि अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं सुधारेंगे, अपने खान पीने में बदलाव नहीं करेंगे, तो आपको जो साइलेंट हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं वो आप फेस कर सकते हैं। उसमें ना एज का रिस्ट्रिक्शन है, ना किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन है। और सबसे अच्छा लगा मुझे जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया, वो जंक फूड के बारे में किया। को बोलने दे दीजिए। जी सर, जी सर, थैंक यू। नमस्कार। मैंने थोड़ा एक्चुअली हम एक जगह यहाँ पे किशनगंज आए हुए हैं एक कार्यक्रम में, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा एब्सेंट हो जा रहा था क्योंकि काफी फोन आ रहे थे, लेकिन हमने लगभग 80% आपके इसको सुना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए। और अभी तो मैक्सिमम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जैसा शुरू में ही आपने कहा कि क्योर तो नहीं हो सकता है लेकिन कंट्रोल हो सकता है। और एक हमारा सोसाइटी भी बना हुआ है लाइफस्टाइल मेडिसिन के हिसाब से हम डिजीज को, और ऑस्ट्रेलिया में उसका कॉन्फ्रेंस होते रहता है। और मेरा एक फ्रेंड है CMC वेलोर में,
वहाँ डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, CMC वेलोर में। तो वहाँ लोग जाते हैं और उस चीजों के, और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि एक एज के बाद हेल्थ जो है सबसे बड़ा चीज होता है, और सबसे बड़ा वेल्थ होता है, वेल्थ से भी बड़ा हेल्थ ही वेल्थ होता है। बाकी सारी चीजें ना उसके बाद गौण हो जाती है। तो इसलिए और नेचुरली 3 चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज करना, खाना और शांति से रहना। आलू बैगन पे झगड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है, आप चुपचाप खा लीजिए। ये जो शादी के शुरू में आलू बैगन पे झगड़ा हो जाता है कि बैगन हमको अच्छा नहीं लगता, बनाई क्यों, तो उससे स्ट्रेस होता है, और वो ऐसे स्ट्रेस जिसके बिना काम हो सकता है, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे बेटा मोबाइल क्यों देख रहा है, ये सब थोड़ा हम लोग अवॉइड करें तो चैन की जिंदगी बिता सकते हैं। और मैं सबको बधाई देना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के लिए। काफी बातें हो गई। और डॉक्टर संजीव तो वो दिल के डॉक्टर, हम लोग साथ में वो दिल के सर्जरी करते रहते हैं और हम लोग मरीज को बेहोश करते हैं। लेकिन हाँ, ये स्ट्रेसफुल काम है, लेकिन उनका पर्सनालिटी ऐसा है कि उस स्ट्रेस में ये हमेशा खुश और रिलैक्स रहते हैं। और हम लोग के इंस्टीट्यूट में ये एक है कि अगर कहीं प्रॉब्लम फंस रहा हो तो डॉक्टर संजीव को आप रेफर कीजिए, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद आप लोग का कि इस कार्यक्रम में मुझे लेकिन जोड़ने के सर, लिए। मैंने अभी आज सब लोगों को बताया कि आपने पैलिएटिव केयर और क्रिटिकल केयर में जो मुकाम हासिल किया और एम्स में जो एस्टेब्लिश किया, वो एक नज़ीर है, और पूरे देश में आप क्रिटिकल केयर के एक नेशनल एक्सपर्ट हैं। तो हम लोग यही इनसे बोलते थे कि आप उनसे फायदा उठाइए, उनकी बातों से और नहीं, उनके। वो हम लोग कभी अलग से इस पर बातें रखेंगे कि पैलिएटिव केयर क्या होता है और उस पर कैसे हम योगदान दे सकते हैं। जी, चलिए फिर ठीक है, आज के कार्यक्रम के लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा हमारे। बटवानी सर से रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके किशनगंज से निकल चलिए सर। वो वहाँ निगेटिविटी बहुत है सर, ये मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है आपसे। किस चीज के लिए? किशनगंज से जितना जल्दी हो वहां से काम करके भागिए। थैंक यू। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा। और हमने ये 3 विशेषज्ञों का सुना, और हमारे आयुर्वेद के एक्सपर्ट जो SM भट्ट साहब बोल रहे थे। तो भट्ट साहब, आप क्या बोल रहे थे? आप अपनी बात पूरी करें, इसके अलावा भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो पूरा करें, क्योंकि भट्ट साहब ने बहुत से क्रिटिकल पेशेंट को अपने आयुर्वेदिक रिसर्च से ठीक किया है। तो वो अपना अनुभव बताएं। नहीं, SM भट्ट साहब मेरठ में है। हाँ जी सर, प्रणाम सर, सबको, सारे डिग्निटरीज को प्रणाम मेरा, और सारे महानुभाव को प्रणाम। मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, बहुत कुछ सीखा वही मैं कर रहा हूँ। और कोरोना के बाद मैंने जो समझा कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, चूंकि लाइफ स्टाइल ने इम्यूनिटी कमजोर किया, और इम्यूनिटी सीधे जुड़ा हुआ है खाने पीने से। और जितना पेस्टिसाइड और जितनी सारी चीजें हेविली यूज हो रही थी और सारे किसान प्रॉफिट कमाने के लिए यूज कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे न्यूट्रिशन चले गए। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ इशारा किया सबने, जैसे कि हार्ट अटैक, जिस तरह की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ी है, जिस तरह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ी है। सॉफ्टवेयर के ज्यादातर इंजीनियर्स को मैंने देखा कि उनको सर्वाइकल और कमर की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इवन आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल इतने आवर्स में देख रहे हैं कि उनकी आंखें, उनके पावर इतने बढ़ते जा रहे हैं, वो ठीक करना मुश्किल हो गया है। चश्मा लगाने के अलावा लगता है कोई रास्ता ही नहीं होगा। तो ऐसे में हमने एक चीज डेवलप किया कि भाई वो न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर प्रोवाइड कर दिए जाए जो बॉडी में कम हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं से वो एडजस्टमेंट हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन छोटे बच्चों में इतने साइलेंट हार्ट अटैक से लेके डायबिटीज से लेके आँखों के चश्मे की प्रॉब्लम से लेके ADHD से लेके बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं फैमिलीज़ में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा टेंशन बड़े बूढ़े लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। रिपोर्ट भी उनकी नॉर्मल रहती है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो आयुर्वेदा के एस्पेक्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि जो लाइफ स्टाइल शुरू करें, सुबह 4 बजे उठने से लेकर के जो वैदिक
और शिक्षा में कही गई है, सनातन धर्म का एक पाठ भी था कि सुबह उठिए और थोड़ा टहलिए, नाश्ता करिए, जिम योगा जो भी जाना है करिए। जिम तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जिम हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। हमारे यहाँ योगा और थोड़ा-सा वॉकिंग इतना सफिशिएंट होता है 40 प्लस के बाद। और अगर 2-3 किलोमीटर वॉक कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मेडिसिन है। और जूस में अगर ज़्यादा नहीं, खीरा, करेला, टमाटर को इंक्लूड कर लिया जाए, तो शुगर वैसे ही बैलेंस हो जाता है। और शुगर बढ़ने से बहुत सारे न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन पैरों में आती है। और यूरिक एसिड जो तमाम तरह के खाने खा रहे हैं हम लोग, उसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सारी दिक्कतों से निजात पा सकते हैं अगर एक बार हम पुनः सनातन तरफ लौटें और वैदिक चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू सर। मैं कभी इस पर विस्तार से बोलूँगा और बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। थैंक यू सर। प्रणाम। बहुत अच्छा, आपका भी एक बार डाइट पर सुनेंगे। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर एस के मिश्रा को आपने ही लाया और इतने बड़े आयुष्मान भारत के इतने बड़े डॉक्टर और हमारे ये दोनों डॉक्टर सब कोई 4 डॉक्टर मिलके इतना अच्छा सजेशन दिए। हमारे ऑडियंस में राजेश सक्सेना साहब हैं, इंडियन एलाइड सर्विस के बड़े अफसर हैं। गंगा सागर चौबे हैं, एडिशनल कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स कलकत्ता। आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े अच्छे लोगों का आज संगम हुआ है और इतना बढ़िया अवसर शायद ही मिलता तो है हर बार, लेकिन आज के लोग हैं आप उठा दें। राजेश सेना साहब, यू वांट टू अमिताभ आस्क? जी जी, अमिताभ जी नमस्कार। एक्चुअली डॉक्टर मिश्रा चले गए हैं क्या मीटिंग से? जी नहीं है। नहीं, मैं हूँ। डॉक्टर मिश्रा, आपसे एक दो सवाल है। मैंने एक्चुअली अपना जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट खुद शुरू किया था आफ्टर लॉट ऑफ इश्यूज। आई वॉच द डॉक्यूमेंट्री फोक ओवर बाय डॉक्टर कॉलिन कैम्पबेल, and that led me to read and watch documentaries from Neil Bernard, Michael Greger, Dean Ornish. Then I studied the China studies, particularly the importance of nutrition in life. And there are few issues I want, if you can enlighten us. One is that nowadays intermittent fasting, the Ekadashi fasting, Navratri fasting is getting very popular, and that has been supported by the basically the Nobel Prize to Doctor, a Japanese doctor on autophagy, which says it can means keep your body fit by eating the toxicity within the fasting generate that environment. So, and there are contradictory studies that said that intermittent fasting is harmful also. There are two type of studies going on. One is saying that IF is very dangerous. Other is says IF is very helpful to maintain a healthy lifestyle. In fact, by self understanding and by being part of an organization known as Plant Based Wellness Foundation, about 2 years back, I stopped my beta blockers. I was taking beta blockers for faster heartbeat, suggested by a super specialist, heart rhythm specialist, and I stopped them 2 years back, and I am maintaining perfectly good health and all that. So the issue is that in our group there are a lot of people who have claimed that they have reversed their ailments, which we call chronic ailments, because as you said very rightly, that inflammation is one of the main culprit behind those inflammatory disease like gout or like arthritis or whatever you call it. So, can you elaborate a little bit on the importance of intermittent fasting or the fasting? See, Yeah, that is intermittent. of my interest. Okay, if I may, intermittent fasting, keto diet, these are some of the things which have recently gained ground and they are Okay. coming up in a big way, but they are still under consideration. There a lot of work is going on, and Okay. we have not properly documented them, and the results are inconsistent. So, Okay. what I have said is, as far as what I have described, they are documented and supported by research work. So my suggestion would be avoid intermittent fasting and Okay. do not try to reverse diabetes and things like that, because these things are, more of unfounded and unsubstantiated. So Okay. let's stick to something which is established and not try to experiment, at least with our own bodies.
like you said, you stopped some tablets on your own or whatever on someone's decision. But my suggestion would be stick to the regular things like small meals, frequent meals, the kind of diet that I've suggested, the kind of physical activities I've suggested, and let others do the experiment. We are not meant to do that with our own bodies, at least. So let us stick to the established facts, and the experimental facts can wait unless And they are documented and come to the textbook level. I one, guess Dr. Sanjeev has something to say on this. If one more thing I I'll add, if think, Dr. Sanjeev yeah. can add to that, is like there's a lot of debate about the dairy. There's a study done by National Institute of Nutrition, Hyderabad, which is a government body, and that has been further examined in USA. And that says that if the milk protein casein is more than 8% a part of your protein, that acts as a carcinogenic. There was a study done on rats and all that. So that is very well documented study about that excess milk protein can result as a carcinogenic in your body. So your response to that, Dr. Proteins are not carcinogen. No, I'm I saying milk guess. protein. If say there is a study which I can send you the reference if you Oh, want. milk protein. Yes, Milk I am talking protein. about the milk protein. It says this is No, a no, no, study no, done no. by. Wait a minute. Wait a Yeah. minute. At Hmm. no point of time I have included milk in the diet that I have stated. See, Hmm. milk is overhyped in our country. Milk, That's what I'm बच्चा saying. दूध नहीं पीता, अरे क्या कर रहा है, बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है, मतलब milk has been actually overrated. That's what I'm Point is, saying. Exactly. milk is mostly water and fat. So if you want, we insist on dairy products, which is cheese, paneer, chena, and things like that. But milk as a whole is nothing great. So milk can be taken as milk products are better than the milk, whole milk. Hmm. Similar to fruit juices, we always say that fruit juices are less effective, in fact no effective compared to whole fruits. So go for the whole fruit rather than the juices. Juices are pure, they kill all the micronutrients, and then all the good things are taken out. So go for the whole fruit, whole sabji, and do not go for the juices. Likewise, milk is okay, but it's overhyped, I say, because it's mostly fat. People go out. In fact, it gives you the kind of milk we procure from khatals and other places. That actually puts you to risk for mycobacterium tuberculosis and other infections also. So pasteurized milk, which is come as a packaged milk, from various government agencies and private, they are preferable rather than the milk that we procure because they are not pasteurized. And pasteurization is a very specialized process where you take the milk out to a very high temperature, stay there for a few minutes, and then bring it down. That kills all the harmful things inside. But the kind of milk we procure from the nearby places, now we have no patience to pasteurize it, and we have no equipment also. So, and milk leading to cancer, maybe there may be some studies I've not come across. Maybe you're right. Okay. You Yeah. could be. So another last question, Dr. Sahib, is basically about these markers like 100 in terms of fasting and 140 in terms of PP. I was handling before my retirement the naval officers. I was in charge of the human resource department, and I came across in a service book which was about 30-year-old a cadet who was included as a medically fit officer into Indian Navy. And 30 years back, the medical standards at the in the Navy medical was that they treated 125 as fasting and 180 as PP, which I saw from the medical records of this officer. And then I went through other records also out of curiosity. So, are we reducing these markers to an extent that we are declaring people diabetic and high blood pressure No, no, no. and No, prescribing that drugs is which can that is do more harm than internationally. benefit? The levels are internationally accepted in all countries. We are following the same levels, and the levels are very well defined. Who is diabetic, who is not. So this is again very controversial point. And Yeah. if there are cases where there are some confusions, then we go for something called HbA1c, and that decides whether someone has been having high sugar for a period maybe 3 to 4 months earlier than that. So that settles the issue. So contesting all these small things will not work. If you are diabetic, please continue treatment as advised. And if you're not diabetic, fair enough, stay away from it.
No, I'm not diabetic. I'm not diabetic. I'm fit, Fair perfect. enough. But but I, but the standards have been defined, very well defined, and they're international levels. So we do not question that, and we do not. It's kind of, reinventing the wheel. If No, no, wheel I'm has been not invented, reinventing. let's Doctor, use it. please, please, I'm not No, because reinventing the wheel. see, all these I am points that you talking have raised, from, no, please. I'll tell you, all Yeah. these points are coming up in this unregulated social media, which can come up like morning. I wake No, up no, sorry, and sorry. straight away Let say, me let me let me let me let clarify. me. I am not talking, doctor, about the social media. I No, am no, 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 talking no. of the official I'm medical not talking records about of your. Indian Navy officers who were recruited No, 30 I years know back. that. I know that. But they are still in Yeah, the nascent stage. See, any yeah. research will take about 15 to 20 years. You know, the kind of research people do in medical science, that takes a lot of time. There are prospective research, there are retrospective research. If it is retrospective, then it's easier. No, Prospective no, no. research, Again, I the think, doctor, patients you have are a to be little bit taken aggressive. I'm and they're saying followed up for 15 years, 20 years. That is where the money is spent. Billions of dollars go into, inventing one molecule of antibiotic, I which we agree with just you in swallow like totality. anything. Does that So, mean that 30 so years the back this research Indian Navy was research is a recruiting unfit continuous. officers? Please let me finish. Let me finish. Yeah. You have finished. Let me finish. Research is a long drawn process. Is very expensive. Unfortunately, in our country, we are not doing much of research. Other countries are doing research. We are following that. The day we are in a position to do our own research substantially, which can stand the test of time, then probably we'll go further. What you have mentioned is at a very nascent stage, and let us stick to the established things that I have taught. My Sir, I'm every talking word of that I have established stopped. thing only. You are skirting the issue, please. Pardon me. You're It is talking skirting the about issue. milk No, I am giving saying, an no. isolated I am saying cancer very somewhere. clearly. You're talking 30 years about ago, intermittent we didn't fasting. use You're sweets. talking Doctor, about some absolutely, diet. So I absolutely. think we are unnecessarily dragging these things. No, I'm not Please dragging do these not things. go into. No, 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 no. no, no, no. so I am saying Let's 30 years back, this not this recruiting forum unfit is here officers. to I am discuss. asking This very forum clearly. is here to discuss. No, no, no. You are No, not no. allowing me to finish. This forum is here to discuss the Yeah, I am established again things, discussing. not You are not experiment things. taking my point correctly. I'm saying 30 I years guess the ago, these organizers were the I guess the standards for organizers recruitment of should armed take force into officers. account that here we are not discussing, this is not a classroom. This was more or less one way discussion. I thought out of the things that I discussed, something can come up. Your questions are way beyond that. I never talked about intermittent fasting. I never talked about milk. I said questions from my talk are welcome. But you seem to be having your own agenda. Please, I'm sorry. I anyway squeezed time out from a very busy schedule. Dr. Sanjeev was there. Dr. Badani has left already. Let's stick to the facts which are established. If you follow whatever I've said, even 50% of it, you will live a longer life. And the whole idea of this discussion is to have a healthy and fruitful life. I guess I'm right. So, and I have some very important things to attend to. I thank all of the organizers. Thank you very much. It has been a great talking to you. Great time. Thank you very much. Good night. हाँ, ओके मिस्टर साहब, आई विल बी वी विल बी वेटिंग फॉर योर फ्यूचर डिस्कशन ऑल्सो। और संजीव साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्ट अटैक पर भी अपना एक व्याख्यान देंगे। अखौरी साहब बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं और अभी गंगा साहब अगर से और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ठीक है। तो अखौरी साहब अपनी बात बोल लें। अभी अभी हमारे बीच में नहीं, हमें एसएन बोलना नहीं था। भट्ट और हमें दोनों एक है। पर्सनल इशू और यहाँ पर और भी बहुत विद्वान लोग हैं, हो सकता है कि वो सुलझा दें उस समस्या को। एक जो मैं डॉक्टर मिश्रा से कहना चाहता था, बल्कि दो चीज़ें जो ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम समझते हैं कि हम लोगों के बीच में जो 60 प्लस या 70 प्लस के लोग हैं, उन लोग सबके लिए वी आर नो स्ट्रेंजर्स टू दैट। जैसे एक तो प्रॉब्लम है जिसको पैर का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आर्थराइटिस है या वगैरह, तो टहलना मुश्किल हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि एक्सरसाइज is the best answer to almost all the diseases that we are worried about. अगर हम लोग एक्सरसाइज करें, टहलें, लेकिन जिसको टहलना संभव नहीं हो सके, उसके लिए कुछ है आपके पास ऑल्टरनेटिव? क्या करें, कैसे, हाउ टू गिव द बॉडी some exercise on a regular basis
he doesn't. I mean, a person like me, I suffered from herpes in my toes, so I can't walk. I can't walk, but otherwise I'm okay. I feel like walking. I feel like going to a park, but if I do walking on a regular basis, it will give me a lot of pain. So I don't really don't know what to do about it. That is one. एक और अभी हाल में एक पॉइंट अगर किसी को समझा सके तो बड़ा अच्छा है। बहुत 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 कृपा होगी विद्वान लोगों की। बहुत दिनों से मैंने देखा है कि एल्डरली पीपल, खास करके 60 से 60-70 की उम्र वाले लोगों को डॉक्टर्स एस्पिरिन खाने को देते हैं। एस्पिरिन हम भी खाते थे, 4-5 साल हमने एस्पिरिन खाया और finally I ended up with blood in my urine. तो उसके बाद सडनली जब हमने बताया कि हम इकोस्प्रिन खाते हैं, तो डॉक्टर ने कहा पहले क्यों नहीं बताया आपने? तो पहले आपको बताना चाहिए था कि इकोस्प्रिन खाते हैं। तो इसका मतलब हमें लगा जैसे कि दोनों में संबंध है। इकोस्प्रिन या स्प्रिन जिसको खाना नहीं चाहिए उनमें हम हैं या हम खाते रहे और सडनली आई स्टार्टेड पासिंग ब्लड इन माय यूरिन। तो अब 3 महीने से हमने एस्पिरिन नहीं खाया है एंड आई एम नॉट फीलिंग वर्स और यूरिन भी साफ ही है। तो कोई ऑथेंटिक ये बताए कि एस्पिरिन का रोल कुछ है ऐसा किस सिचुएशन में? जी जी, मैं बताता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि एस्पिरिन या इकोस्प्रिन जी खाना चाहिए या नहीं सब किसी को। जी जी तो देखिए बीच में, हाँ एल्डरली पीपल, ठीक है। बीच में ऐसा करीब 3-4 डिकेड बैक कुछ ऐसे स्टडी आए थे और ये बड़ा पॉपुलर हुआ कि एज ए प्रिकॉशन हम प्रोफाइलेक्टिकली इकोस्प्रिन खाएंगे तो हमारा ब्लड थिन हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, तो हमारे अंदर में ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जमा नहीं होगा, तो हम हार्ट डिजीज से बचेंगे या ब्रेन स्ट्रोक से बचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे जब लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव और बड़े बड़े स्टडी हुए तो ये देखा गया कि प्रोफाइलेक्टिक रोल इकोस्प्रिन का नहीं है जिनको कि हार्ट डिजीज स्टैब्लिश नहीं है। जैसे कि हम किसी एल्डरली पर्सन को ब्लड प्रेशर है, मान लीजिए कि डायबिटीज है, लेकिन हार्ट डिजीज का कोई एविडेंस नहीं है, ईसीजी नॉर्मल है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने देख के बता दिया कि आपके हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, वैसे लोगों को इकोस्प्रिन खाने से कोई फायदा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर एविडेंस है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज आपको है, आपको चलने में पेन होता है या आपकी ईसीजी में फाइंडिंग आई है या कोई एंजाइम बढ़ा हुआ है, माने एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तब इकोस्प्रिन खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, ये जरूर कि अगर कोई डायबिटीज है, कोई आदमी डायबिटिक है और इवन इफ उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की एविडेंस नहीं है, तो एटोरवास्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है वो प्रोफाइलेक्टिव देते हैं हम लोग, वो खाना से उनको फायदा होता है, क्योंकि जो डायबिटिक होते हैं उनके बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि उसमें फैट जमा होते हैं और एथ्रोमेटस प्लेक बन सकता है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज स्टैब्लिश नहीं है तो इकोस्प्रिन खाने का फायदा नहीं है। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सीओपीडी क्या है? इज इट नॉट ए हार्ट डिजीज? सीओपीडी हार्ट डिजीज नहीं, सीओपीडी लंग्स की डिजीज है। हार्ट और लंग बड़े क्लोजली रिलेटेड होता है, लेकिन सीओपीडी का एक एब्रिविएशन है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब जो हम सांस लेते हैं, जो हमारा एयरवे है उसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बहुत दिन से हो गया है, तो ये सीओपीडी कहलाते हैं। जो कि आजमा, जो हम सब जानते हैं आजमा से मिलता जुलता है, बिल्कुल आजमा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न इन्होंने और पूछा था कि तो एक्सरसाइज के लिए क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूट सर ने पूछा था एक्सरसाइज
हाँ पूछिए पूछिए। अनुमति है हाँ अमिताभ जी? पूछिए, हाँ पूछ, आप ही के एक प्रश्न एक को मैं छोटा पूछ सा रहा सवाल था। पूछने का। हाँ पूछिए। देखिए, आज और ऑर्डिनरीली हम अपने बारे में बता सकते हैं कि 6-7 टैबलेट्स या 4-5 टैबलेट रात को खाएं अगर, तो कुछ डर लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स होते होंगे। ये ऐसा डर लगता है कि नहीं पता नहीं। तो अब ऐसा लगता है कि थोड़ा फिर रात को पानी पीने की आदत लग गई है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि रात को आप लोगों ने क्या डॉक्टर साहब मिश्रा साहब ने बताया कि 7 बजे के बाद पानी मत पानी नहीं पीजिए। तो अब उठेंगे, खाना खाएँगे और 4, 8, 7 टैबलेट ऊपर से खा लेंगे। तो उसके बाद मन करता है कि शायद वाटर का इन्फ्लुएंस कुछ डाइल्यूशन तो उससे होगा, तो शायद किडनी पर असर किडनी या लिवर पर कोई खास मतलब उसके जो एडवर्स इफेक्ट है उससे बच जाएंगे। इसमें कोई तथ्य है? इसमें कोई तथ्य है या कि थोड़ा डाइल्यूट वाट पानी पी लेने से probably the side effect will be less? डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर संजीव। जी सर, देखिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन है, उसके जी कुछ कुछ फायदे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम पर या पर्टिकुलर डिजीज पे काम करता है, तो किसी दूसरे सिस्टम पे जी या दूसरी डिजीज पर हो सकता है कि उसके कुछ मामूली एडवर्स रिएक्शन हो या एडवर्स इफेक्ट हो। तो हर के कुछ न कुछ जी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हमें वे करना है कि इसका फायदा हमारे लिए कितना है। अगर थोड़ा बहुत एलर्जिक रिएक्शन है, थोड़ा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, अगर ये हो भी तो उतना नुकसान नहीं है जितना हमारा फायदा है। लेकिन कुछ अच्छा पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे अच्छा दूसरे ऑर्गन को बिल्कुल नुकसान कर सकते हैं। इसको हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। वैसी दवाइयों को नहीं खाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे पेन किलर आप खाते हैं, तो उसकी किडनी पर हाँ डायरेक्ट इफेक्ट बिल्कुल तो नहीं खाने चाहिए, उसमें उसमें कम से कम खाना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा आपका क्वेश्चन है था कि एग्जैक्टली हाँ 7 बजे के बाद पानी पीना है या नहीं खाना है। देखिए एक जनरल ये है, ये डिजीज से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल वेल बीइंग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जो उन लोगों ने बताया जी कि आप जो आम लोगों को अर्ली डिनर करना चाहिए। पुराने जमाने में अंग्रेज लोग हाँ करते थे कि अर्ली डिनर कर लीजिएगा, तो 7-8 बजे तक डिनर कर लीजिएगा, तो उससे आपको जो पाचन जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसके लिए पूरा समय मिलता है, मसल्स रिलैक्स रहते हैं, तो वो फायदा होता है आपको। लेकिन आजकल के लाइफ स्टाइल में ये रूल नहीं है, ये फायदा होगा। जैसे एक्सरसाइज आप करेंगे तो फायदा होगा, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि थोड़ा बहुत अगर कम एक्सरसाइज करें तो बहुत नुकसान होगा। तो अगर आप ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस एज ग्रुप में हैं, तो इसलिए। तो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अगर आप अर्ली खा सके तो बेटर है, नहीं खा सके तो अगर आपका परमिशन नहीं देता है लाइफ स्टाइल तो बहुत उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि दवाइयां जो आप खाते हैं उसके साइड इफेक्ट इसलिए कम हो जाए कि ज्यादा पानी पिएंगे, ये सही नहीं है। उसके साइड इफेक्ट हो गए एब्जॉर्प्शन पे, ऐसा नहीं है। एब्जॉर्ब हाँ नहीं है। लेकिन पानी पीना हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर आपकी किडनी सही है, आपके हार्ट ठीक है, कई बार हार्ट फेलियर और हार्ट का फंक्शन कम होता है, तो कम पानी पीने को हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड का ओवरलोड ना हो। उसी टाइप से किडनी का अगर कुछ प्रॉब्लम है तब लेंगे, अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी आदमी के लिए जो पानी पिए तो अच्छा ही है। तो ऐसा नहीं है कि 8 बजे के पीना ही नहीं चाहिए। अरे 8 बजे पीना चाहिए, नहीं पिएंगे तो गैस्ट्राइटिस हो सकती है। एक जनरल लाइफ स्टाइल है कि आप अर्ली अर्ली डिनर लें तो बेटर है, और लाइट डिनर लें। डिनर हमेशा लाइट लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दिन में बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए, रात में कम खाना चाहिए। तो ये आप अपने एनवायरनमेंट, अपना प्रोफेशन, अपना लाइफ स्टाइल, आपका क्या काम है, क्या इससे ये देख के डिसाइड करें, कोई थैंक रूल यू नहीं। सर, थैंक यू, हम्म, थैंक यू वेरी बहुत मच, बहुत 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 अच्छा। अमिताभ जी। समय बहुत हो गया है, लेकिन अभी हमारी जैसे राजेश जी ने हाथ रेज किया, रमाकांत पांडे विद्वान है, अभी उमेश जोशी जी हैं। अब सुनने को तो बहुत कुछ है,
हमारे पास डॉक्टर साहब हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं सर 10 सेकंड लूंगा सर, ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए एक बात बोलना प्रसाद साहब के लिए। प्रसाद साहब, मैं इस चीज को बहुत आजमाया हुआ गंभीरता से डॉक्टर लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मन में डर कभी मत रखिए सर, डर जी तो हटा दीजिए। और जो मैं एक बार मैं अपने घर की बात कह रहा हूँ, गलती से मैं बहुत खराब सड़ा हुआ दाल फ्रिज में रखा हुआ खा गया, गलती से हम अपना खा गए तो वाइफ बोली कि आप खा गए, अरे मतलब तो कुछ हुआ नहीं, फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, लेकिन वही जो डर होता है ना सर, वो आपको दैट इज अनदर किलर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जोशी जी शॉर्ट में बोल दें। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छी वार्ता रही डॉक्टर मिश्रा साहब की, और डॉक्टर संजीव कुमार भी सर भी यहाँ पर हैं, बदानी साहब भी थे। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसे कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं, तो किसी के स्टंट लगाया है, किसी के ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो उन लोगों को कहते हैं कि आप ये अर्जुन की छाल का पानी पीजिए। क्या ये अर्जुन की छाल का पानी पीना कंपलसरी है? इससे क्या फायदे होते हैं, या ऐसे ही कहते हैं? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर संजीव कुमार सर। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि पहले तो मैं बताऊं कि कंपलसरी कुछ नहीं है। कंपलसरी जो हम लोग एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन के हैं, तो जो दवाइयां हम बताते हैं वो जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, शायद डॉक्टर अमिताभ ने बताया, तो अर्जुन छाल के बारे में तो वो स्पेशलिस्ट है, अगर वो ज्यादा प्रकाश डालें तो अच्छा है। हाँ, तो अभी भट्ट साहब निकल के सर मतलब ऐसे कहते हैं कि हार्ट की अगर डिजीज है तो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। जैसे नॉर्मली आज मिश्रा साहब की वार्ता से जो पता चला वो लगा कि कुछ चीजें हार्म करती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, एक्सरसाइज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ता है, लाइक दैट हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो खाने में जो 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 अनसैचुरेटेड फैट है वो खा सकते हैं, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर जैसे कि हमारा जो इंडियन घी है, शुद्ध घी, जी सर, वो अनसैचुरेटेड है। अच्छा। अगर हम उसको फ्राई कर लेते हैं तो सैचुरेटेड बन जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप रोटी में हल्का घी लगा के खाएं, दाल में घी डाल के खाएं, लेकिन उसका तड़का ना बनाएं, पराठे नहीं बनाएं, पूड़ियां नहीं छानें। ये फ्राई करने से ये सैचुरेटेड फैट हो जाता है, ये नुकसान करता है। तो ये थोड़ी चीज है जो आपको हार्ट डिजीज वाले को जानना है, एक्सरसाइज करनी है, और बस कैलोरी मेंटेन करना है। कोई ऐसा चीज नहीं कि बिल्कुल नहीं खाइए। कई बार लोग बोलते हैं चावल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, थोड़े थोड़े अमाउंट में खाइए। जो आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी के आसपास, उतना मेंटेन है बस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पांडे जी कुछ बोलेंगे क्या? रमाकांत पांडे जल्दी से एक लाइन। अब चंद्रेश्वर खान की बात सुनेंगे। अभी हमारे पास एक डॉक्टर हैं, अब उनकी बात सुन लेंगे और उनसे सलाह ले लेंगे। अब बहुत अच्छा सलाह मिल रहा है। हाँ। नहीं तो अब हम चंद्रेश्वर खान साहब से उनकी अमृतवाणी सुनेंगे। और एक प्रश्न और संजीव जी, के लोग बोलते हैं, जैसे एक कलकत्ता का डॉक्टर हैं बैनर्जी, डॉक्टर बैनर्जी, ही यूज्ड टू टेल दैट कि हम डायबिटीज का जो गोली 10 बरस 20 बरस से खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जाके जब तक खाते हैं उसका जब तक असर होता है, हमारा शुगर कम कर देता है, प्रेशर कम कर देता है। प्रेशर की भी गोली रेगुलर मतलब एलोपैथिक खाना पड़ता है, लेकिन वो मतलब बोले तो डिजीज जाता नहीं है, और दवा कहीं ना कहीं जाके कहीं किसी बॉडी में उसका असर दिखाता है और किसी किसी बॉडी को निष्काम कर देता है। इस संबंध में आप क्या बोलेंगे डॉक्टर संजीव जी? ये पूरा तथ्य सही नहीं है। बात सही है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है ये फिजियोलॉजिकल चेंज है बॉडी में। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन या बॉडी का कोई भाग डिस्टॉर्ट हो गया वो डिजीज नहीं है। तो बात सही है कि ये डिजीज अगर फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया बॉडी में तो अमूमन लाइफ लॉन्ग रहता है, किसी किसी के ठीक हो जाते हैं। तो मेरा मकसद है कि आपका डायबिटीज जो है, ब्लड शुगर, वो कंट्रोल में रहे। मकसद ये नहीं कि दवाई जिंदगी भर खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा, इसको नहीं सोचना है। सोचना है कि अगर हमारा इतनी दवाई खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल है तो उतना खाना है,
अगर हम कम करके देखते हैं कि बढ़ जाता है, इसका मतलब कि उसको खाना है। अगर कम करके देखते हैं कि नहीं बढ़ता है, तो कम कर सकते हैं। तो मकसद है कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। दवाई अगर जरूरी है उसको कंट्रोल रखने के लिए तो खाना है। इसको उसके साइड इफेक्ट उतने नहीं हैं जितना कि इसका फायदा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हम लोगों को आपने रिलीफ दिया, बहुत अच्छा रिलीफ दिया। अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। ऐसे तो अभी 3-4 विद्वान और भी हैं, लेकिन समय का ध्यान रखना है जिससे कि हम भविष्य में भी इतने बिजी डॉक्टर लोगों को हम लोग सुन सकें। तो चंद्रेश्वर खान साहब, आप अपना आशीर्वाद वचन दें। ये हिंदुस्तान के बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर हैं और टाटा के ग्रेट एग्जीक्यूटिव में से एक हैं। तो चंद्रेश्वर खान साहब, हमको इटिक्सन बेलू के मास्टर ट्रेनर बनाने वाले यही हैं, पंचगनी महाराष्ट्र से। आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद अमिताभ जी। आज मैं जिस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ धन्यवाद के लिए, वो है डॉक्टर संजीव मिश्र बदानी और भट्ट। मेरा ये हमेशा मानना है कि सचिव, गुरु और वैद्य, इनको जो बोलना है, जो कहना है, इनको जब तक हम सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो शायद हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस चीज को हमें उन्हीं के पास में जाना है। बराबर, तो बहुत बढ़िया, इन बहुत पर बढ़िया। विश्वास, और इसी चीज को आज जो मैं धन्यवाद दे रहा हूं, श्रद्धावान लभते ज्ञान, और उसमें मैं लगाना चाहूंगा कि श्रद्धावान को जो बोला गया है, संजीव जी का नाम भी संजीव है और इन लोगों ने संजीवनी बूटी दिया, उसे अपने जीवन शैली में ला करके आजकल शब्दों का अनुवाद करके डॉक्टर साहब हमने देखा है तो बहुत फायदा हुआ। पहले लोग बोलते थे कि आपकी जीवनचर्या कैसी, मतलब आपका जीवन का आचार विचार क्या है, कौन विचार आपके जीवन के लिए ठीक है और उसके अनुरूप आप आचार कर रहे हैं। आप सबों ने संवेद डॉक्टर संजीव का, डॉक्टर मिश्रा को ये कहना, बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं। मैं डॉक्टर लोगों के साथ में टाटा के लिए, टाटा मोटर के एम्प्लॉयज के लिए डॉक्टर साहब लोगों से बातचीत करके हमने कहा कि देखिए हॉस्पिटल पर लोड कम होगा यदि आप कुछ चीजों को ऑडिटोरियम में आएंगे, बताएंगे। मैं जीवन शैली, विचार और उन चीजों के बारे में आपके सामने बोलूंगा। यदि गलत बोलूंगा तो आप टोक दीजिएगा। और लोगों को क्या करना है, जो सबको करना है, आप यदि ग्रुप में बोलेंगे तो बहुत फायदा होगा। रोग वगैरह जो है वो होते हैं, और दोनों हमारे मेडिकल के जो हेड थे और सर्जरी के जो हेड थे, दोनों ने इसको माना और ये लंबे दिनों तक चला। और बहुत सारे एम्प्लॉइज ने, ऑफिसर्स ने, टॉप मैनेजमेंट के लोग, उन लोगों ने कहा कि चंद्रेश्वर जी आपने सबका भला किया। तो वही जीवन चर्या, ये डॉक्टर के मुंह से सुनना, जिनको सब चीज का ज्ञान है, और वैसे हम बोलते हैं, दोनों में फर्क है। क्योंकि ये एक समय में व्यवहार का मामला है, जिसको मैं बोलता हूं TFA, कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी फीलिंग कैसी है और आप कैसा एक्ट करते हैं। यही तीनों मिला करके आपका व्यवहार होगा, और जो आपका व्यवहार होगा वही आपकी जीवन शैली हो जाएगी। तो आपने सबों ने जो इन चीजों को रखा बेबाक, हम हृदय के अंतरतम की गहराई से प्रार्थना करते हैं, सफेद केस के चलते आशीर्वाद देते हैं। और डॉक्टर को मैं ईश्वर मानता हूं, क्योंकि उस समय जब कोई बीमार पड़ता है
तो डॉक्टर के अलावा और कोई दिमाग में नहीं आता है। तो डॉक्टर साहब, आप लोग भी जीवेत सर्वम सतम रवियेत सर्वम वसंतम, और आपके पास जो मरीज या रोगी आते हैं वो आरोगी होकर के निकले, यही कामना, यही प्रार्थना, यही धन्यवाद और यही आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस वाह, यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी अमृत वाणी भगवान करे फलीभूत हो, और हम आपकी तरह डॉक्टर बदानी और डॉक्टर संजीव जी को भी कई बार बेस्ट डॉक्टर्स अवार्ड भी मिल चुके हैं, और ये दोनों हमारे ट्रेनिंग में आए हुए हैं। ये लोग दो दो तीन तीन सर्टिफिकेट हम लोगों का डीओपीटी के ट्रेनिंग का हमारे हाथ से ले चुके हैं, और हमें बहुत आज भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे महान विभूति लोग हमें आके मोटिवेट करते हैं, और हमारा सत्संग चलता रहेगा। और कल कमिश्नर लोगों का देते हैं, कलकत्ता के आईएएस मलय घोष जी बोलेंगे, और ये गंगा सागर चौबे बोलेंगे, और एक और हैं, वो तीनों मिलकर के बताएंगे कि आज 8 बरस से जो हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं उससे हमारे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा। ये भी एक नया विज्ञान है, एक नई दुनिया में आएंगे। और डॉक्टर संजीव से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्ट डिजीज को रोकने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और हो जाने के बाद हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जिससे कि हमें परेशानी ज्यादा नहीं हो। इस पर एक आपका लेक्चर एक दिन का हम जरूर सुनना चाहेंगे। बदानी साहब तो हमारे यहाँ हमेशा आते रहते हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहता है। आपका भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। हालांकि हम लोग बहुत उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हम लोगों के लिए ईश्वर हैं, ईश्वर स्वरूप है। जैसा कि चंद्रेश्वर खान साहब ने बताया, आज हम जिंदा हैं आप लोग के बदौलत। हमें 2 अटैक हो चुका है, पेसमेकर लग चुका है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन आज मेरा वेबिनार इतना सफल है कि विदेश से भी लोग इसमें न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, ये अफ्रीका से, और दुबई से, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ गए हैं, और वो लोग बेचैन हैं कि हम कुछ अपना नॉलेज लोगों को शेयर करें। डॉक्टर मिश्रा जी ने इतने बिजी शेड्यूल में इतनी बातें बताई, और हम लोगों ने बहुत आज ज्ञान अर्जित किया। हम कल से चेष्टा करेंगे 4 बजे सवेरे उठ के टहलना और रेगुलर जिंदगी बिताने का, जिससे कि जब तक लाइफ है अच्छा से जी लें। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, सच सच प्रणाम। और कल जरूर सब कोई आइएगा। कल रेवेन्यू कलेक्शन से भारत को क्या लाभ हो रहा है, और एक अकेला आदमी ट्रंप ने पूरे दुनिया के इकोनॉमी को हिला दिया है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स पर भी हम लोगों की बात होनी चाहिए। और कल इसके एक्सपर्ट आ रहे हैं, फिनांस सेक्रेटरी हैं वो आईएएस मलय घोष जी, वो आ रहे हैं, और गंगा सागर चौबे आ रहे हैं, और हमारे प्रसाद साहब रहेंगे। हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के और स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं। कल हम लोग फिर सुनेंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये रिकॉर्डिंग 1 घंटे में हमारे विनय शुक्ला जी भेज देंगे, हम सभी को भेज देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। संजीव जो है वो दिल के डॉक्टर भी हैं, और उनका दिल भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। कल फिर मिलते हैं। विनय शुक्ला जी को धन्यवाद, जोशी जी को, या वो लोग अपना रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। प्रसाद साहब को प्रणाम, चंद्रेश्वर खान प्रसाद साहब को साहब को प्रणाम। प्रणाम भी, और केरला हाँ एक्सपीरियंस। हाँ, रमाकांत पांडे जी को भी प्रणाम।